Good evening, students. Continuing with the PYQs on matrices, coming to category 3. When I talk about category 3 के questions किस टाइप के आएंगे? यहाँ पे generally questions आपको eigen values and eigen vectors ढूंढने पे आने वाले हैं. Eigen values and eigen vectors ढूंढने के questions generally, okay? When I say generally, 99% times, 1% chances है नहीं follow होने का. Generally ये जो questions होते हैं वो 6 marks के लिए आएंगे and नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट येस लिटिल लेंदी. जहाँ पे वेक्टर्स कैलकुलेशन आ जाता है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है. स्मॉल. ओके, so let's begin with the question. This is a question from December 2023. Matrix is given to you. The question is very clearly asking you to find the eigenvalues and eigenvectors. Okay, so let's look at this. It's a 3 cross 3 matrix. As discussed in the last video, we'll first find the characteristic equation always. Okay, base step जो होता है वो आपका characteristic equation का ही होता है. So characteristic equation is given by determinant of A minus lambda times I is equal to 0. And shortcut method apply करेंगे. 3 cross 3 है तो lambda cube trace of A times lambda square plus A11, A22, A33 into lambda minus determinant of A equals to 0. We had discussed this very much in detail in the previous video, video number 2. Okay, and if you require any reference, you can go back there and check it out. Let's get back. Lambda cube minus trace is nothing but addition of diagonal elements. यहाँ पे जितने diagonal elements हैं उनका addition. 3 plus 5 is 8 plus 3 is 11. तो lambda cube minus 11 lambda square plus A11 ढूंढने के लिए रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 को निगलेक्ट करेंगे. इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे. 15 minus 1 हो जाएगा 14 प्लस नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के लिए या A22 की वैल्यू के लिए रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 2 निगलेक्ट करेंगे. 3 3 9 minus 1 is 8 and lastly A33 के लिए रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 3 को नेगलेक्ट करेंगे. अगेन 15 minus 1 is 14 into lambda minus determinant of A calculate करने के लिए I'll use a calculator. Calculator should be on the matrix mode. You can see it is already on matrix mode. I'll still show you mode में जाना है. Option number 6 matrix. अलग अलग कैलकुलेटर में थोड़े सेटिंग्स अलग अलग होंगे डिपेंडिंग ऑन योर कैलकुलेटर. यू कैन चेक इट आउट. आई चूज ऑप्शन नंबर 1. अगेन ऑप्शन नंबर 1 3 क्रॉस 3 के लिए मेरा मैट्रिक्स यहाँ पे है 3 -1 +1 अगेन -1 5 -1 1 -1 and lastly it's a 3. ओके, वैल्यूज एंटर कर दिए हैं. AC प्रेस करने से मैट्रिक्स सेव हो जाएगा. हमको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. शिफ्ट मैट्रिक्स determinant option number 7. Again, shift matrix. Matrix A is option number 3. Let's calculate the determinant. The determinant is 36. So I'll get a minus 36 here. Equation convert कर लेते हैं. Lambda cube minus 11 lambda square plus ये हो जाएगा 22 plus 14 again 36. Correct? Yeah. Now let's use again your calculator. This time we are going to solve a cubic equation. तो आपका mode जो होगा वो equation mode होगा. Option number 5. क्यूबिक इक्वेशन फोर्थ ऑप्शन है. कोएफिशिएंट्स डालेंगे 1 -11 36 एंड -36. फर्स्ट ऑप्शन और द फर्स्ट आंसर इज 6. नेक्स्ट आंसर इज 3 एंड द थर्ड आंसर इज 2. तो आपको 3 आंसर मिल चुके हैं. लैम्बडा इज 6 3 2. अब यहाँ पे आता है आपका वेरिफिकेशन का स्टेप. हमेशा वेरीफाई कैसे करोगे आप? यू यूज अ प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस. इनका एडिशन कितना है? 11. और ट्रेस कितना मिला था हमको? 11. ओके, दोनों वैल्यूज इक्वल आ गए.
आप दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, कोई भी एक, ओके, वन इज इनफ। आई एम जस्ट शोइंग लिटिल इन डिटेल, आप बहुत क्विकली कर पाओगे बाद में। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट इज 6 इंटू 3 इंटू 2, जो 36 हो रहा है, एंड डिटर्मिनेंट हमने जो अभी अभी कैलकुलेट किया था 36 ही था, करेक्ट। तो दीज वैल्यूज आर अगेन मैचिंग। तो ये क्रॉस चेक करने के तरीके होते हैं कि मेरा कैलकुलेशन करेक्ट गया है कि नहीं यहाँ तक। इफ यू चेक इन बिटवीन, एंड तक जाके फिर वापस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। So yeah, this is how you can cross check and cross verify. We got three different eigenvalues. Eigenvalues का part complete हो चुका है. As I said, eigenvalues का part छोटा है, eigenvectors का part is long. Let's move on to the eigenvectors. Eigenvectors calculate करने के लिए आपको एक ही equation बार बार solve करना है, 3 बार basically, 3 eigenvalues है तो you will be solving the equation a minus lambda I into capital X is equal to 0. I'll call this as equation 1. हमारे पास लैम्बडा की 3 अलग अलग वैल्यूज हैं, हम तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर द फर्स्ट वन आई विल पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब मेरा इक्वेशन बन गया a माइनस 6 टाइम्स आई इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल। अब a माइनस 6 आई कैसे कैलकुलेट करते हैं? यू कैन ऑफ कोर्स डू इट मैन्युअली। व्हाट आई डू इज डायगोनली 6 सब्ट्रैक्ट कर लो, बिकॉज 6 टाइम आई इज 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा मैट्रिक्स which is -3, -1, +1, -1, -1, -1 again, 1, -1, and -3. Capital X is nothing but small x, y, z. You can also take x1, x2, x3. And right hand side पे आ जाएगा 0, 0, 0. आई होप ये प्रोसेस क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है, एक और वैल्यू के लिए देख लेते हैं। We put lambda equal to 3 again in equation number 1. इस बार 6 की जगह 3 सब्ट्रैक्ट करना है। 3 सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे यहाँ पे मिलेगा a minus 3i, and here the matrix is 0, -1, 1, -1, 2, -1, 1, -1, and 0. Again you will use x, y, z. Again you will take 0, 0, 0. And यही सेम प्रोसेस हमको इक्वेशन नंबर 1 में 2 के साथ भी करना है, लैम्बडा इक्वल टू 2. We'll do it later. First let's complete this one. सम कंप्लीट नहीं हुआ है, आइगन वेक्टर ढूंढना बाकी है। Okay, let's go to the calculation. Okay. Now one thing, यहाँ से 2 मेथड्स एप्लीकेबल होते हैं। एक होता है where you take free variables and एक होता है क्रेमर्स रूल। कौन सी मेथड कब लगानी है? अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। आपके पास 3 रोज है, ओके। ये मैट्रिक्स में 3 रोज अवेलेबल है, दोनों मैट्रिक्स। हमारे पास 2 मैट्रिक्स है and both the matrix have 3 different rows, row number 1, 2, 3. Here also 1, 2 and 3. तीनों रोज को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 3 इक्वेशन आ रहे हैं, 3x, -3x, -y and +z equal to 0, -x, -y, -z equal to 0, and x minus y minus 3z equal to 0. यहाँ पे भी आई एम गेटिंग 3 इक्वेशंस, so 0x I can ignore, -y plus z is 0, -x plus 2y minus z is 0, and x minus y is 0. Okay. Now when can you apply Kramer's rule is when आपके पास minimum 2 अलग इक्वेशन हो। Kramer's rule का फर्स्ट रिक्वायरमेंट एंड द ओनली रिक्वायरमेंट इज आपके पास 2 अलग इक्वेशन होने कंपलसरी है, ओके, मिनिमम। उससे ज्यादा अलग हुए नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देखोगे दोनों केसेस में 3 अलग अलग इक्वेशंस हैं दोनों साइड, लैम्बडा इक्वल टू 6 के लिए भी, लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए। You generally don't solve both together.
आई एम सॉल्विंग बोथ टुगेदर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेप्स बेटर. आप एक पूरा कैलकुलेशन लैम्बडा इक्वल टू 6 के लिए कंप्लीट करोगे, फिर लैम्बडा इक्वल टू 3 पे जाओगे. यू डोंट सॉल्व देम टुगेदर. ओके, so let's begin with Kramer's rule. Because हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन प्रेजेंट है, आप कोई भी दो इक्वेशंस चूज कर सकते हो. So we can decide which ones to take. Let me call them as A, B, and C, or you can have 2, 3, 4, whichever is comfortable. A, B, C में से I have to select any two. I will select say first and the second. My choice. When I select first and the second, numerator में x अगर होगा, डिनोमिनेटर में x के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, y के कोएफिशिएंट एंड z के कोएफिशिएंट फ्रॉम इक्वेशन 1. ऑब्जर्व, आई हैव चोजन दीज टू इक्वेशंस. तो y का कोएफिशिएंट -1, z का कोएफिशिएंट +1. y का कोएफिशिएंट -1, z का कोएफिशिएंट -1. So that's how I write the first determinant. Then the y is always negative. ये रूल है. Then you'll again have determinant. जैसे x के टाइम पे हमने x का कोएफिशिएंट नहीं लिया था, उसी तरह से y के टाइम पे हम y का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे. ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, या ओके. अब y का कोएफिशिएंट नहीं लेना है, तो x का कोएफिशिएंट -3 एंड -1. रिमेंबर, इफ आई हैव चोजन इक्वेशन a एंड b, हम इक्वेशन a एंड b पे ही स्टिक रहेंगे, चेंज नहीं करना है बीच में सम पे. या तो आप स्टार्ट से b एंड c ले लो, आपका कोई भी जो फेवरेट हो आप ले लो, योर चॉइस. बट यू डोंट चेंज द इक्वेशन इन द मिडल ऑफ द सम एवर. ओके, सो या मूविंग फर्दर, -3, -1, and here I'll have +1 and -1 from z. Z will remain positive. Again, z के नीचे you will not write the coefficients of z, x के coefficients and y के coefficients. Denominator is a determinant. Calculate कर लेते हैं. So x is divided by ये +1 and again a +1, right? So that's going to be 2. Negative y divided by 3 + 1, which is 4, and z divided by 3 - 1, which is 2. डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन टर्म निकलता है आप उससे मल्टीप्लाई कर लो. मतलब बेसिकली 2 is common, so what I do here is I divide the denominator by 2 or I multiply the numerator by 2. So when I multiply the numerator by 2, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, and ये 2, and yeah. So let me write. You don't need to show this calculation. You can do it in your mind. So x upon 1 बचेगा, -y upon 2 and z upon 1. This means you have found your first eigenvector x1 as 1, -2 and 1. The negative sign has come from y का coefficient being negative. Okay, y is still negative. So that's how we found the first eigenvector. As I said, this could be little time consuming, but yes, with practice your speed will increase. Okay, moving further to lambda equal to 3. We've completed lambda equal to 6. Moving to lambda equal to 3. Lambda equal to 3 के लिए आपके पास सेम ऑप्शन है क्रेमर्स का या फिर शॉर्टकट मेथड आई कैन अप्लाई हियर इज, दो इक्वेशन है जहाँ पे एक एक वेरिएबल मिसिंग है, तो वो थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा मेरे लिए. आई कैन से y इज इक्वल टू z फ्रॉम हियर, एंड उसको हम अगर सेकेंड इक्वेशन में डालें, तो दिस सेकेंड इक्वेशन नाउ बिकम्स -x plus y equal to 0. Or I can say, okay, this I'll scroll this side. X is equal to y. And when I put x is equal to y in the last equation, I'm actually getting 0 equal to 0. Okay. Let's, okay, let's try and solve them a little differently. Okay. See, if you put x is equal to y, last equation का कोई वैल्यू नहीं है, 0 equal to 0, कोई वैल्यू मिल नहीं रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला है, x is equal to y which is equal to z. तो आप तीनों की वैल्यू 1 ले लो या तीनों की वैल्यू 2 ले लो, बट 2 लोगे तो आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, तो तीनों की वैल्यू 1 ले लो, आपको सेकेंड वेक्टर आ चुका है, x2 is available. Okay, we are not yet done with the sum because आपको lambda equal to 2 के लिए यही सारे steps repeat करने हैं. So we will have to put lambda equal to 2 again in equation number 1.
And when I put it there, I'll get a minus 2I into capital X is equal to 0. You either use Cramer's rule or you do this way. Depending on the equation, you should get your answer. Okay? So I leave this calculation for you. Do not worry, we're doing more sums. So you will get better practice. But then I think that calculation you should be able to manage on your phone. Okay. Moving further, question B. This is December 2022 का question. Again, 6 marks का question. Let's see how do we tackle this. Start कहाँ से करना है? Characteristic equation से start करेंगे वापस. तो यहाँ पे फिर से characteristic equation is determinant of a minus lambda I equal to 0. 3 क्रॉस 3 का क्वेश्चन है तो हम फिर से शॉर्टकट मेथड 3 क्रॉस 3 वाला lambda cube trace of a into lambda square plus a11 a22 and a33 into lambda and negative determinant of a. Okay, let's substitute the values. So you will have lambda cube trace of a होगा वापस diagonal elements का addition. यहाँ पे एक -2 है तो आपका addition हो रहा है 5. तो 5 times lambda square plus a11 की वैल्यू निकालने के लिए रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1 नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -6 plus 10 which is 4 plus a22. A22 में these two numbers will get multiplied and these two numbers, that is -8 and +6. So I'm left with -2. And lastly, 12 minus 6, which is 6. Lambda minus determinant निकालने के लिए again you will use your calculator. I'll have to change the mode. Mode आपका होना चाहिए matrix, which is option number 6. If I'm again inputting the values in matrix A, which is 3 cross 3, I'll put 4, 6, 6, 1, 3, 2, -1, -5, and -2. To save the values, I'll press EC, shift, matrix, option 7, which is determinant. Again, shift, matrix, matrix A. Your answer is 4. Answer is 4, equal to 0. Simplify कर लेते हैं. Lambda cube minus 5 lambda square plus 8 lambda minus 4 is equal to 0. Let's solve this equation again using calculator. Mode में आप equation में जाओगे, which is fifth option. Cubic equation, that is fourth. आपके values है 1, -5, +8 and -4. One of the eigenvalues is 1, second eigenvalue is 2. आप देखो वापस आपको तीसरी eigenvalue नहीं मिल रही है, सिर्फ x1 and x2 दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक eigenvalue कोई तो repeated है, कोई तो एक वैल्यू है जो रिपीटेड है, या तो 1 रिपीट हो रहा है या फिर 2 रिपीट हो रहा है. कैसे पता करेंगे कौन सा रिपीट हो रहा है? ट्रेस से पता करेंगे. ट्रेस की वैल्यू 5 है, मतलब तीनों आइगन वैल्यूज के एडिशन. अगर यहाँ पे एक छोटा सा x होता तो आपका 1 + 2 + x की वैल्यू 5 होनी चाहिए थी, बिकॉज ट्रेस 5 है. तो इससे कैलकुलेशन कर लो, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 - 3, मतलब 2 है. ओके, सो आपकी कौन सी आइगन वैल्यू रिपीटेड है? लैम्बडा इक्वल टू 2 रिपीटेड है. आई होप दिस इज क्लियर. You don't need to show the calculation. You just need to understand how you have calculated. Okay. So yes, we have completed the first part. That's eigenvalues. We need to complete eigenvectors. Again, like the previous question, we need to consider the equation a minus lambda I into capital X equal to 0. Equation number 1. अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज थे, तो हमने उसको 3 बार सॉल्व किया था, मतलब 2 बार मैंने सॉल्व किया, एक बार आपके लिए छोड़ दिया है कैलकुलेशन के लिए. बट यहाँ पे 2 ही आइगन वैल्यूज है. So let's see how does it go ahead. Okay. Again, we'll put the first eigenvalue, say lambda equal to 1 in equation number 1. जब lambda equal to 1 substitute करोगे, आपके पास a minus I बचेगा.
into capital X is equal to 0. Let me subtract I. I subtract करना मतलब diagonal elements से मुझे 1 subtract करना होगा. What will I get here? I'll get a 3, 6, 6. I'll get a 1, 2, 2. And I'll get a -1, -5, and -3. Again, capital X is X, Y, Z equal to 0, 0, 0. Let me continue the calculation this side. Now let's understand here. I repeat. Again, you need to check. अगर आपके पास दो अलग इक्वेशन आ रहे हैं तो आप क्रेमर्स यूज कर सकते हो. ऑब्जर्व नंबर्स अलग दिखेंगे बट ये वाला जो रो है इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर दो तो इट इज सेम एज सेकेंड रो. रो नंबर 1 को डिवाइड बाय 3 करोगे तो सेम एज सेकेंड रो है. तो इक्वेशन फॉर्म में अगर देखोगे तो दोनों इक्वेशन सेम है. ओके, बट ऑफ कोर्स फॉर्चुनेटली वी डू हैव इक्वेशन 3 व्हिच इज डिफरेंट. आपके पास अभी ऑप्शन यही बचता है, या तो आप 1 एंड 3 लो या फिर सेकेंड एंड थर्ड लो. ओके, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे. सो आई राइट द इक्वेशन हियर x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0. ये 2 से आ गया या 1 से आ गया. एंड लास्ट वाले से नेगेटिव साइन हटा देंगे. x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 0. इट्स एज सिंपल एज मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1. ओके, आप नेगेटिव साइन हटा सकते हो. हमारे पास दो ही अलग इक्वेशन है. इक्वेशन रो नंबर 1 एंड 2 से सेम इक्वेशन बन रहा है. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. But yes, we do have two different equations, so I can apply Kramer's rule. So let's apply Kramer's rule. I'll have x divided by determinant of x होगा तो उसका कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, y and z के कोएफिशिएंट लिखने हैं. नेगेटिव होगा y हमेशा. You don't write the coefficient of y, so you write the coefficient of x and you write the coefficient of z. Again, for z, you don't write the coefficient of z, so you write 1, 1, 2, 5. Let's calculate the determinant. I'll have x over 6 minus 10 is -4. I'll have negative y over 3 minus 2, which is 1. And I'll have z over 5 minus 2, which is 3. So I basically have x upon -4, y upon -1, and z upon 3. पूरे इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर आ चुका है, which is 4, 1, and -3. Okay, we have got one eigenvector. Now let's understand how do we get the second eigenvector for lambda equal to 2. So again, we will put lambda equal to 2 in equation number 1. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? We get a minus 2i into capital X is equal to 0. Let's subtract and bring it down here. तो यहाँ से अगर -2 करते हो आप, what you will be left with is 2, 6, 6, 1, 1, 2, -1, -5, -4, x, y, z as it is, and 0, 0, 0. Okay. Observe, you require two different equations. First row and second row same equation नहीं दे रहे. First row is 1, 3, 3, second row is 1, 1, 2. तो आप फर्स्ट एंड सेकंड यूज कर लो, थर्ड पे मत जाओ बिकॉज वहाँ पे नेगेटिव साइंस है. दैट इज आल्सो ओके. इफ यू स्टिल वांट टू यूज द थर्ड वन, मल्टीप्लाई बाय -1, दैट्स आल्सो ओके, नो प्रॉब्लम. So I still have the first equation as x plus 3y plus 3z equal to 0. I have divided by 2 there, okay? And I'm using x plus y plus 2z equal to 0. I'm not using the third one. And because I have two different equations, I can apply Kramer's rule. So I'll apply Kramer's rule and let's see what we get here. What I get over here is x upon 3, 3, 1, 2, negative y divided by 1, 1, 3, and 2. Okay, this is 2. And lastly, z divided by, you have 1, 1, 3, 1.
Let's do the calculation. I'll have x over 6 minus 3, which is 3, negative y over 2 minus 3, which is negative 1, and z over 1 minus 3, which is negative 2. So what I'm left with is x over 3, y over 1, and z over minus 2. So you're just left with x2, which is 3, 1, negative 2. So here you got only one eigenvector. Basically, there are questions where you will get two eigenvectors when you have a repeated value. But in this question, you're getting only one. Okay? So it's not wrong. It's absolutely correct. This is your आंसर. अगर आपको आइगन वेक्टर भी चेक करना है करेक्ट है कि नहीं है ओके उसकी भी एक टेक्निक है आई शो यू आइगन वेक्टर का एक्चुअली कंडीशन है मतलब उसका डेफिनेशन ये है कि ए टाइम्स एक्स जो होता है वो लैम्बडा टाइम्स एक्स होता है ओके ये प्रॉपर्टी है उसकी आई एम शोइंग यू वेरिफिकेशन चेक कैसे कर तो हमारा मैट्रिक्स जो ए था विच इज 4 6 6 1 3 2 -1 -5 and -2 if I'm not wrong let me check this is just to check okay चलो ये मेरा मैट्रिक्स मैंने कॉपी डाउन कर लिया है थोड़ा सा स्पेस के हिसाब से ओके आई एम गोना चेक फॉर x2 तो यहाँ पे कैपिटल x2 लिख देंगे 3 1 -2 चलो लेट्स मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस व्हाट्स द मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 12 प्लस 6 18 18 माइनस 12 राइट so you will be left with 6 सेकेंड रो मल्टीप्लाई करते हैं 3 plus 3 6 minus 4 that's 2 and last row -3 -5 that's -8 plus 4 that's -4 now what is this is your left hand side okay a times x2 what should be your right hand side lambda x2 lambda क्या होना चाहिए 2 आप 2 times x2 चेक करो क्या ये 6 2 minus 4 है are these values equal if the values are equal your answer is absolutely correct I hope this is clear and same manner you can check it for the other one also यहाँ पे x1 यूज करोगे आप तो अगर x1 यूज करोगे तो 4 1 -3 यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 16 plus 6 which is 22 22 minus 18 4 4 plus 3 7 7 minus 6 is 1 minus 4 minus 5 minus 9 plus 6 is minus 3 and your lambda over there was 1 right your lambda was 1 so इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम वेक्टर दे बोथ आर सेम so our answers are correct in both the cases I hope verification is also clear with all of you and verification might take little minutes but then आपके precious marks बच जाते हैं okay so this was sum number 2 which we have completed यहाँ पे तीसरा eigen vector नहीं आएगा so let's look at one last question in this particular category the question is limited only to eigenvalue यहाँ पे eigen vector नहीं पूछा है मई 2023 में 5 मार्क का ये क्वेश्चन आया है ओके तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे वापस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी गिवन बाय determinant of a minus lambda I equal to 0 चेक करो आप खुद से सॉल्व करके if you're getting this as your characteristic equation I'm going to skip the steps to save time okay you can check now we have done so many questions let's solve this equation we have 1 we again have 1 we have
negative 21, and negative 45. So first eigenvalue is 5, second is -3, the third is not given, तो कोई एक eigenvalue repeat हो रही है. तो lambda is 5 minus 3. Last time की तरह property use करेंगे. Sum of eigenvalues is equal to trace. Trace यहाँ पे आपका -1 है. तो ये addition check करो. 2 plus x is -1. आपकी x की वैल्यू -1, -2, which is -3 हो जाएगी. ओके, तो आपकी रिपीटेड वैल्यू -3 है. आपकी रिपीटेड वैल्यू -3 है. So that's how you find your eigenvalues. eigenvalue मिलने के बाद eigenvector नहीं ढूंढना है because क्वेश्चन में नहीं पूछा है. अब आपको ढूंढना है eigenvalue for these values. So how do we define that? Use the property. We have the property that since if the eigenvalues, I'm using short form, आप एग्जाम में यूज मत करना, of A is lambda, then eigenvalue of A raised to n is lambda raised to n. Also, eigenvalue of A is lambda implies eigenvalue of A inverse is 1 over lambda, and eigenvalue of identity matrix is always 1. We have seen this in video number 1. Okay, so let's start with eigenvalues of 4 times A inverse, A cube, and I. You'll have two combinations here. 4 times 1 upon 5, 5 का cube and 1, comma 4 times -1 over 3, -3 का cube plus 1, and यही वापस repeat होगा because वही eigenvalue repeat हुई है. तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 4/5, 126 ऐड हो जाएगा यहाँ पे. ये होगा -4/3, -27 प्लस 1, या फिर हम इसको लिखेंगे डायरेक्टली -26. वापस यही रिपीट होगा -4/3 -26. ये कैलकुलेशन कंप्लीट करने के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. कंप्यूटेशनल मोड पे रखना पड़ेगा कैलकुलेटर को. That's the first option. I have 4/5 plus 126. That's 634/5, comma -4/3 plus 26. That's 74/3, and that's going to be repeated. So these are your required values. And this was the last question in this particular category. I hope the category is very much clear and no one has any doubts here. One last category remaining, which I'll take up in the next video, and then the topic or PYQs of matrices are completed.